Okay, first we'll discuss or we'll revise that radioactivity part. So basically, one question is to ask from radioactivity, and basically either from alpha decay or basic laws of radioactivity. Okay, so in radioactivity, first of all, the laws of decay. So you have a X nuclei that is decaying to Y nuclei. X is your parent and Y is your daughter. Initially, at t equals to 0, the number of X स्क्रीन nuclei. क्लीन नहीं है सर, हाँ जी, स्क्रीन क्लीन नहीं है सर। Sir, what you are saying? Can you please repeat? No sir, the screen was not pinned at first. So I told you that the screen was not pinned. Now it is okay, sir. Now it is okay now. Yeah. So initially at t equals to 0, that number of parent nuclei is n naught, and at the number of daughter is 0. At time t equals to t, the number of parent nuclei is n, and number of daughter will be n minus n naught. So number of parent nuclei, the number of parent nuclei left at time t, that is equals to how much? N naught e to the power minus lambda t. So n is here number of undecayed parent nuclei after time t. And n naught is your initial parent nuclei, number of initial parent nuclei, and lambda is called decay constant, right? And from here, that half-life, there's a concept of half-life. So t at t equals to t half. What is half-life? At t equals to t half, the number of undecayed parent nuclei, that will be n naught by 2. The time required for the time at which the number of undecayed parent nuclei becomes half of its initial value is called half-life. Okay, so if you substitute here n naught by 2 equals to n naught e to the power minus lambda t half. From here, you will get that expression for half-life, and that will be 0.693 by a lambda, right? In fact, you can represent that number of undecayed parent nuclei at any arbitrary time. You can represent that in terms of half-life. So that will be n naught into 1 by 2 t by t half. So for any arbitrary time, the number of undecayed parent nuclei will be initial number of parent nuclei into 1 by 2 to the power t by t half. So if you know half-life for any arbitrary time, you can find the number of undecayed parent nuclei. Okay, and the number of undecayed parent nuclei for nth half-life. For nth half-life, it will be how much? Number of undecayed parent nuclei for nth half-life. Nth half-life means what? The t equals to nt half. So if you substitute it here, so what will happen? The number of undecayed parent nuclei for nth half-life, it will be n naught into 1 by 2 the power n. So you can find that number of undecayed parent nuclei for nth half-life. Then there is a concept of activity. There's a concept of activity.
ओके, तो बेसिकली ज्यादातर टाइम अगर देखोगे क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाता है, आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई नहीं दिया जाता है, आपको ग्राम दिया जाता है, राइट? कि 16 सॉरी 137 मिलीग्राम सीजियम, है ना? तो आपको ग्राम में दिया जाता है, फिर आपको क्या करना पड़ता है, ग्राम से आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालना पड़ते हैं। दैट यू कैन डू बाय यूजिंग एवोगाड्रो दैट मोलर कॉन्सेप्ट। You can use that molar concept and you can calculate the number of nuclei for a given weight, right? So suppose मान लो आपको कुछ मिलीग्राम कार्बन दिया है, तो वहां से कितना नंबर ऑफ कार्बन न्यूक्लियाई है, that you can calculate by using molar concept. For example, suppose they have given you 1 milligram carbon 12. So इसमें कितना नंबर ऑफ कार्बन एक्चुअली है, कार्बन न्यूक्लियाई, so that you can calculate by using molar concept. So 12 gram will contain how many nuclei? That will be your Avogadro number. So यहाँ से 1 मिलीग्राम कितना नंबर ऑफ कार्बन न्यूक्लियाई कंटेन करेगा, यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो ज्यादातर टाइम जब आप कैलकुलेट मतलब रेडियो एक्टिविटी का जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, तो ये जो एवोगाड्रो या मोलर कॉन्सेप्ट जो है, दैट यू हैव टू यूज, है ना? डायरेक्टली ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बहुत टाइम नहीं गिवन होती है। Okay, now there's a concept of activity. Activity is nothing but rate of decay minus dn by dt mod. So activity that is also a function of time. Okay, so activity means you'll have n naught lambda e to the power minus lambda t, and n naught lambda is called a naught e to the power minus lambda t. So activity of your sample means rate of decay, that is also function of time. Initially there is a rapid rate of decay of parent nucleus, but जैसे जैसे time बढ़ता जाएगा, with increasing time there is exponential decay of activity or rate of decay of your sample. ठीक है? But you have to keep in mind that a naught is nothing but n naught lambda. That is called initial activity. Then there is a concept called method of successive decay. Method of successive decay. Suppose you have a X nuclei is decaying to Y nuclei with decay constant lambda 1, and Y is further decaying to Z with decay constant lambda 2. And let us assume that Z is stable. Let us assume that Z is stable. Okay. At time t equals to 0, the number of X nuclei is n naught, Y is 0, and Z is 0. At time t equals to t, that X nuclei becomes N1, Y becomes N2, and Z becomes N3. So if you use this law of decay or laws of disintegration of radioactivity, you can find that number of X nuclei at time t, that will be how much? That will be n naught e to the power minus lambda on t. You know, just by using laws of decay. In fact, you can calculate that n2 t कितना होती है? If you use that laws of decay, you will get n naught lambda on divided by lambda 2 minus lambda on e to the power minus lambda on t e to the power minus lambda 2 t. So this is the number of X nuclei after time t, number of Y nuclei after time t, and number of Z nuclei will be how much? कितना होती है? That will be n naught, then on minus lambda 2 by lambda 2 minus lambda on e to the power minus lambda on t plus lambda on divided by lambda 2 minus lambda on e to the power minus lambda 2t. तो यहाँ से आपको दे सकता है
यहाँ से आपको पूछ सकता है कि दिस इज द नंबर ऑफ Z न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम t। तो आपको वो पूछ सकता है कि जब आपका t much smaller than 1 by lambda 1 and also it is much smaller than 1 by lambda 2, then how much n3 will be there actually। कैसे करोगे दिस काइंड ऑफ इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। बट ये जो फॉर्मूला है n2 and n3 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। सर एक्सपोनेंशियल को हाँ, इसको आपको 1 ब्रेक माइनस करना लैम्डा पड़ेगा। एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियल को आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा एंड यू हैव टू टेक द टर्म अप, यू हैव टू टेक दैट अप टू क्वाड्रेटिक टर्म यू हैव टू टेक ना। Yes, up to हाँ, 1 minus lambda 1 p and lambda 2. एग्जैक्टली आपको टी स्क्वायर तक लेना पड़ेगा, राइट, एंड देन यू हैव टू सिंपलीफाई इट। इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है ना। इनफैक्ट इस तरह की भी दे सकते हैं। सपोज मान लो इनटू टी को लेकर, सपोज मान लो आपको लामडा, ये आपका लामडा गिवन है ना, एक आपका 10 लामडा है, सपोज दिस इज योर 10 लामडा एंड दिस इज योर लामडा। तो आपको पूछ सकता है कि जो आपका n2 है कुछ गिवन होगा कि 10 टी टाइम बाद और n2 जो है टी टाइम बाद, इसका रेशियो किस तरह की होगा। इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली जो है n2 और n3 का जो फॉर्म है वो उस फॉर्म, ये फॉर्म आपको जानना बहुत जरूरी है ना। तो पहले n3 स्मॉल टाइम के लिए कैसे नंबर ऑफ n3 निकालोगे, है ना, या n2 डिफरेंट टाइम में कैसे निकालोगे जब आपका ये पैरामीटर गिवन है डी के कांस्टेंट, है ना। इनफैक्ट at what time that n2 will be maximum, if you see that plot, है ना, n1 n2 n3 का अगर प्लॉट देखोगे it will be like what this, that n3 sorry n1 will be like this, then n2 will be like this and n3 will be like this, right? So at what time, this is your n1 graph, this is your n2 graph and this is your n3 graph, right? So at what time that n2 will be maximum, है ना। So let us so at time t that n2 is maximum, it means what, that dn2 by dt, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, that will be 0, right? तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे कि t dash at what time that n2 will be maximum, क्या आती है, on by lambda 1 minus lambda 2 ln lambda 1 by lambda 2, है ना। तो इसको कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाता है कि lambda 2 by lambda 1 होगी या lambda 1 by lambda 2 होगी। अगर इसको lambda 1 पहले लिख रहे हो, lambda 1 minus lambda 2, तो फिर ln को भी lambda 1 को पहले लिखना पड़ेगा, lambda 2 को उसके नीचे लिखना पड़ेगा। अगर lambda 2 minus lambda 1 लिख रहे हो तो इसका मतलब आपको lambda 2 को यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा, lambda 1 को यहाँ पे उसके बाद लिखना पड़ेगा नीचे, ठीक है। बट n2 और n3 का जो फॉर्म है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन देयर इज ए इक्विलिब्रियम, radioactive equilibrium। So this equilibrium is achieved, if you remember the n2t, the form of n2t in successive decay was n0 lambda 2 divided by lambda 2 minus lambda 1 e the power minus lambda 2 t sorry lambda 1 t minus e the power minus lambda 2. So in radioactive equilibrium there is a one is called secular equilibrium. One is called secular equilibrium. Secular equilibrium means basically what, that n1 lambda 1 that will be equals to n2 lambda 2. When this condition is as if, that will be called secular equilibrium, and that is only possible जब आपका lambda 2 is much greater than lambda 1, है ना। And even though you know there's a relation between lambda and
half life is like lambda is inversely proportional to half life, right? So it means the half life of x nuclei है ना, अगर सक्सेसिव डिको को देखोगे तो हाफ लाइफ ऑफ x nuclei that will be much greater than half life of y nuclei. तो सेकुलर इक्विलिब्रियम में क्या होता है, n1 lambda 1 n2 lambda 2 ये बराबर होती है ना, and this will be achieved only when lambda 2 is much greater than lambda 1. So ये वाला टर्म आपका इग्नोर हो जाएगा, and it means that half life of x nuclei that will be much greater than half life of y nuclei. Then you have a transient equilibrium. You have a transient equilibrium. And in transient equilibrium actually है ना, n2 by n1 that will be sub independent on time, that will get you will get some constant value. Constant means independent on time. Similarly n3 by n2 that will be constant, some different constant you will get. But of course in transient equilibrium that ratio n2 by n1 that will be constant, n3 by n2 that will be another constant, and so on. The ratio will be constant, and this will be achieved जब आपका lambda 2 is lambda 2 is greater than lambda 1. तो सेकुलर इक्विलिब्रियम जो है इनिशियली अचीव कर सकते हो, बट ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम बेसिकली इनिशियली अचीव नहीं होते. दिस कैन बी अचीव आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ डीके प्रोसेस, है ना. एंड द कंडीशन ऑफ ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम इज lambda 2 is greater than lambda 1. It means the half life of x nuclei in successive decay that will be greater than half life of y nuclei. Okay, so एक आपका सेकुलर इक्विलिब्रियम में क्या होती है, हाफ लाइफ ऑफ x न्यूक्लियाई दैट इज मच ग्रेटर देन हाफ लाइफ ऑफ y न्यूक्लियाई. बट ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम में क्या होती है, half life of x nuclei is greater than half life of y nuclei. But you have to keep in mind that transient equilibrium cannot be achieved initially. It can only be achieved after long time of decay process. And in transient equilibrium the ratio will be constant. और secular equilibrium में क्या होती है, n1 lambda 1 that is constant, n1 lambda is equals to constant, n2 lambda 2 equals to constant, and that will be same, n1 lambda 1 equals to n2 lambda 2, n3 lambda 3, and so on. Okay, so these are the equilibrium. Now there is the alpha decay process. ठीक है, तो एक तो बेसिक लॉज ऑफ रेडियोएक्टिविटी से आपका क्वेश्चन आते हैं, और एल्स देयर इज द alpha decay process. So you have alpha decay achieved for large mass number nuclei, right? So suppose you have a x nuclei is decaying to x atomic number z, mass number a is decaying to daughter nuclei atomic number z minus 2, mass number a minus 4, and you have a alpha particle, and there's a release of energy, है ना. यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल. So look simple, but यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आता है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल will be how much, a minus 4 by a then into disintegration energy or q value. This value will be provided. If not provided, you can calculate by taking, you know how to calculate it, right? Nuclear mass difference, from that you can have calculated. तो कुछ टाइम आपका ये गिवन होती है Q वैल्यू, और आपको डायरेक्टली ये काइनेटिक एनर्जी कैरिड आउट बाय अल्फा पार्टिकल इज हाउ मच, दैट यूज्ड टू आस्क, है ना. सो दैट इज वेरी सिंपल, यू कैन कैलकुलेट. अगर गिवन नहीं है तो न्यूक्लियर मास गिवन होगी, वहां से आप Q वैल्यू निकाल सकते हो. न्यूक्लियर मास या बाइंडिंग एनर्जी गिवन होगी, वहां से आप निकाल सकते हो Q वैल्यू को. देन यू कैन कैलकुलेट दैट एनर्जी कैरिड आउट बाय अल्फा पार्टिकल. ठीक है ना. So this a minus 4 is the mass number of daughter nuclei. A is the mass number of parent nuclei. ठीक है ना. अगर सपोज मान लो आपको पूछा गया है कि what is the kinetic energy of daughter nuclei, कैसे करोगे? So
अल्फा डीके में जो एनर्जी इमिट होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड पार्टिकल। तो यहाँ पे जो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज योर एक्चुअली क्यू वैल्यू। तो आपको क्यू वैल्यू प्रोवाइड होगा या नहीं प्रोवाइड है, यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम गिवन डाटा लाइक न्यूक्लियर मास और बाइंडिंग एनर्जी, और यहाँ से फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट कर लो। और आपको पता है क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये आपका रेस पर है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस 0 दैट इज योर क्यू वैल्यू। तो ये आपका गिवन होगा या कैलकुलेट कर लोगे फ्रॉम गिवन डाटा, either binding energy or nuclear mass given होगा वहां से कैलकुलेट कर लोगे, then you will calculate kinetic energy of emitted alpha particle, उसके बाद kinetic energy of daughter nuclei you can calculate। excuse me। then quantum tunneling of alpha particle। okay? So as you, if you remember that in alpha decay, you have x z a is decaying to I z minus 2 a minus 4 plus alpha plus q alpha, right? So what is r? अगर देखो न्यूक्लियर पोटेंशियल का जो नेचर होती है, दिस द नेचर ऑफ न्यूक्लियर पोटेंशियल, और ये जो बैरियर हाइट होती है that is b equals to around 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, and this is the q value और काइनेटिक एनर्जी कैरिड आउट बाय अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। और ये जो r है, r is what actually, r is the situation when the daughter nuclei surface and alpha particle nucleus surface are in touch, है ना, this is the daughter nuclei, okay। So this is your y nuclei and this is your alpha particle। So r will be how much, r क्या आएगा यहाँ से, r will be the radius of daughter nuclei plus radius of alpha particle, and that will be r naught, into mass number of daughter nuclei की power 1/3 plus mass number of alpha particle की power 1/3। तो यहाँ से आपको r कैलकुलेट कर लोगे। तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैरियर हाइट निकालने के लिए बोलेंगे। सो आई विल कैलकुलेट द बैरियर हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे, so barrier height means just you have to calculate the Coulomb barrier height. This barrier height is nothing but Coulomb barrier height at a distance of r, when the separation between daughter nuclei center and alpha particle nuclei center is r. What will the Coulomb barrier height, that is your actually this barrier height. So that will be how much, that will be simply 2 into e, that is charge of alpha particle into z minus 2 e divided by 4 pi epsilon naught r, है ना। कूलम एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हो आप, q1 q2 by 4 pi epsilon naught r। So same thing you are using, the 2e is the charge of alpha particle and z minus 2e that is the charge of daughter nuclei divided by 4 pi of 4 pi epsilon naught r, where r is the separation between the center of daughter nuclei and center of alpha particle। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बैरियर हाइट कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं, दैट इज द बैरियर कूलम्ब बैरियर हाइट। सो दैट विल बी 2 times z minus 2 into e square divided by 4 pi epsilon naught r, ठीक है ना। और बैरियर विड्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बैरियर विड्थ मींस व्हाट, अगर यहाँ इस जगह पे देखो, लेट अस डिनोट दिस इज योर b, तो देखो जो आपका कूलम्ब बैरियर vc at b, हाउ विल राइट, vc at b क्या हो जाएगी, दैट विल बी 2 into z minus 2
into e square divided by 4 pi epsilon naught. अब center to center कितना separation है now? The center to center separation of daughter and alpha particle, that will be your b, right? And that देखो इस सिचुएशन में जब दोनों डॉटर एंड अल्फा पार्टिकल का जब सेपरेशन b है, तो इस सिचुएशन में जो आपका कूलम्ब बैरियर का जो हाइट है दैट इज सेम एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल और disintegration energy of alpha decay process. So these two values are nearly same. Okay, so यहाँ से आपको क्या पता चल गया? First you will calculate. So this at this point, what is happening? That Vc at B or Coulomb barrier at B, that is same as the Q value of alpha decay process. यहाँ से आप B पता कर लोगे. You'll calculate B क्योंकि आपका एक Q value given होगी आपको. Q value given होगी, यहाँ से आपको B कैलकुलेट कर लोगे. तो बैरियर विड्थ एक्चुअली कितना है? दिस इज द बैरियर विड्थ दैट इज फेसिंग बाय अल्फा पार्टिकल व्हाइल इज डिकेइंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप R कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से. देन फ्रॉम ए गिवन Q वैल्यू ऑफ अल्फा डिके यू कैन कैलकुलेट B बिकॉज डॉटर न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर पता है, अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर पता है. Q वैल्यू आपको गिवन होगी, यहाँ से B कैलकुलेट कर लोगे. अब जो बैरियर विड्थ आएंगे that will be B minus R. So this much will be the barrier width facing by alpha particle while it's crossing that barrier. Then beta decay process. Then you have a beta decay process. Okay, so beta decay process is initially it was like that P minus electron E, then you have a neutron. I mean this is a proper beta decay process. अगर beta decay process का जो energy curve देखोगे है ना, so number of beta particle, number of emitted beta particle along y-axis and along x-axis that energy carried out by beta particle. So see that curve, it is like that. तो जो बीटा पार्टिकल इमिट होती है उसका एनर्जी क्या होती है? 0 भी हो सकता है और मैक्सिमम एनर्जी कितना हो सकती है बीटा पार्टिकल का? मैक्सिमम एनर्जी हो सकती है दैट इज द, कल जो भी मैं बता रहा था, दैट विल बी द Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन. तो इस रिएक्शन में जो आपका Q वैल्यू आएगी, व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज द बीटा डीके प्रोसेस, दिस इज द बीटा पार्टिकल, राइट? तो इस बीटा पार्टिकल का एनर्जी क्या हो सकता है जो इमिट हो रहा है बीटा पार्टिकल का? इसका एनर्जी, कई सारे एनर्जी पॉसिबल है. द spectrum of energy of beta decay particle is continuous. It can take energy from 0 to maximum energy. और जो maximum energy होगा that will be the Q value of this process. इतना आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी ये बोल देता है कि मैक्सिमम एनर्जी बीटा डीके का कितना होगा. तो मैक्सिमम एनर्जी बीटा डीके का मतलब भी पूछ रहा है कि Q वैल्यू कितना है इस डीके प्रोसेस का. ठीक है, इतना आपको कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम एनर्जी बीटा डीके का जब बोले कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा डीके पार्टिकल इज हाउ मच, इसका मतलब ही पूछ रहा है कि Q वैल्यू कितना है, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी जो होती है दैट इज द Q वैल्यू और मिनिमम एनर्जी कितना होगा बीटा पार्टिकल का, दैट विल बी 0. और जो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल जो इमिट होता है इसका एनर्जी जो होती है बेसिकली दैट इज E max by 3. मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल जो इमिट होता है जिसका एनर्जी होती है E max by 3. Then there is a selection rule. Okay, so directly I am writing that selection rule here. So first of all, transition
then L value, then you have a Fermi transition. You have a Fermi transition. Fermi transition, right? Then you have a Gamow-Taylor transition. Right? Fermi transition में क्या देखोगे? You have a delta J, change in J, and change in parity. And Gamow-Taylor again you have a delta J and change in parity delta phi. So first of all, 0 to suppose you have a 0 plus to 0 plus transition. इसको क्या बोलते हैं first of all? अगर 0 plus to 0 plus transition होती है इसको क्या बोलते हैं basically हम? This is called super allowed. super allowed. This is called super allowed. It's called super allowed. इसके लिए L value कितना होती है? 0. Okay, and the delta J will be how much? 0. Parity change no. And super allowed transition is only allowed in Fermi transition. This is not applicable for Gamow-Taylor transition. Then there's an allowed transition. Then there's an allowed transition. So allowed transition के लिए L कितना होती है? L is 0. और delta J की वैल्यू क्या आएगी Fermi transition में? If you have a Fermi transition, delta J will be how much? 0. 0, right? Is it 0 or plus minus 1? Can you please check? 0, sir. 0, right? And for is there any change in parity here? No, sir. No. What about delta J for allowed transition in Gamow-Taylor? 0 plus minus 1. 0 plus minus 1 and no change in parity. Then you have a first forbidden. First forbidden. Okay. What is the L value here? 1. L is on. What is the J value here? Delta J. What is the delta J here? Plus minus 1. Plus minus 1. That's good. You have a plus minus 1. Is there any change parity? Yes. Yes. What about delta J in Gamow-Taylor? To be 0 plus minus 1 0 plus minus 2. Exactly. Plus minus 1 plus minus 2. And yes, there is a change in parity here. And next you have a second forbidden. L is 2, right? And what about delta J in Fermi transition? That is plus minus 2. No change in parity. और Gamow-Taylor में क्या होता है? Plus minus 2 plus minus 3 and no change in parity. ठीक है? तो इस तरह से ट्रांजिशन चेक करनी है ना? So this will be the most probable. Allowed transition will be the most probable, है ना? Then your first forbidden, then second forbidden. तो कोई गिवन आपका अगर ट्रांजिशन गिवन होगा है ना तो वहां पे चेक करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि पैरिटी का कोई चेंज है और डेल्टा जे क्या है, फिर आपको मैच करना पड़ेगा. और मैच कहाँ से स्टार्ट करोगे? मैच करना ऊपर से शुरू करोगे. जहां भी आपका ऊपर मिल जाएगा मतलब मैच हो रहा है आपका डेल्टा जे एंड डेल्टा पाई, दैट विल बी योर आंसर. Then you have a gamma decay. Then you have a gamma decay. Okay, so suppose you have a daughter nuclei, I is at excited state. When it is coming to ground state, there is an emission of photon having energy E gamma. So जब आपका excited state से ground state आएगा है ना, there will be emission of photon, right? And there is a gamma photon. Your daughter nuclei आप जो gamma particle emit होती है, that is was possible only after either emitting alpha decay or beta decay. After that, the nucleus is not in ground state, it is in excited state. That nucleus is to come to ground state by the emission of gamma particle.
है ना? When there is a emission of gamma particle, it will have some corresponding momentum, है ना? ये आपका रेस पर था ऑयस्टर, जैसे ट्रांजिशन हुआ है, there is emission of photon having some non-zero momentum. So to preserve or to conserve that angular moment, to conserve that linear momentum, your daughter nuclei will move in opposite direction. Okay, so what will the kinetic energy of this daughter nuclei? कितना आ जाएगा kinetic energy? If E gamma is known, then the kinetic energy of this daughter nuclei will be E gamma square by 2 into mass of daughter, nuclear mass of daughter nuclei into C square. This is the energy of this daughter nuclei, and this is because of recoil speed. Initially, oyster was stationary. During transition, there's emission of photon or gamma particle having non-zero linear momentum. So to conserve that linear momentum, that your daughter should move in opposite direction of immediate photon. So there will be some kinetic energy of this daughter nuclei, and that will be E gamma square, that is the energy of gamma particle, divided by 2 times mass of nuclear mass of daughter nucleus into C square. And what will the energy or Q value of gamma decay process? Q value क्या होती है? That will be E gamma This kinetic. square by 2 times md C square plus E gamma. ठीक है, तो आपको ई गामा गिवन होगी, आपको ई गामा गिवन होगी और आपको पूछा जाएगा, सपोज अगर एग्जांपल लोगे, सपोज आपका बेरियम है 56 on 37, ठीक है, और आपका ये डीके हो रहा है बेरियम 56 on 37 प्लस गामा पार्टिकल, और यहाँ पे गामा पार्टिकल का एनर्जी गिवन है, दैट इज 662 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इज हाउ मच? डॉटर मींस दिस न्यूक्लियाई, तो क्या करोगे? 662 किलोमीटर 10 पावर 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ डॉटर कितना रखोगे? डॉटर का मास नंबर 137 into mass of proton, that will be the mass of daughter into c square. C square का वैल्यू रखोगे, right? That will be the answer. Now there is a selection rule in gamma decay. The selection rule in gamma decay. So suppose you have initially your parent, your daughter nuclei having spin Ji, parity pi I. When it's coming to ground state, the ground state is having spin Jf, parity pi I. So your daughter initially at excited state having spin Ji, parity pi I, and it's coming to ground state having spin Jf, parity pi f. So there will be emission of photon having angular momentum L. So if you write that conservation of angular momentum, so what you can write that Ji should be equals to Jf plus L. जहाँ पे L can take क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं? L can be greater than mod of Ji minus Jf to mod of so ये जो L का वैल्यू क्या हो सकती है? This is the L angular momentum of emitted photon that can take values from mod of Ji minus Jf to mod of Ji plus Jf, है ना? So L should be greater than equals to this and it should be less than equals to this. And that gamma radiation का cause दो तरह की हो सकती है, एक आपका इलेक्ट्रिक कॉज, एक आपका मैग्नेटिक कॉज हो सकती है। और इलेक्ट्रिक अगर पैरिटी कंजर्वेशन लगाओगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो पैरिटी कंजर्वेशन में क्या लिखोगे? अगर इलेक्ट्रिक कॉज है, एक आपका इलेक्ट्रिक कॉज
एक आपका मैग्नेटिक कॉज है। सो इलेक्ट्रिक कॉज के लिए जब आप पैरिटी कंजर्वेशन करते हो, सो पाई आई इक्वल्स टू एक्चुअली हाउ मच, पाई आई क्या हो जाएगा, पाई आई शुड बी इक्वल्स टू पाई एफ इंटू माइनस ऑन द पावर एल, है ना, बिकॉज पैरिटी इज मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। इनिशियली कितना था, पाई आई इक्वल्स टू पाई एफ, प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, फोटोन एंड योर ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियस। So pi I equals to pi f into minus on the power L for electric cause, और magnetic cause के लिए हम कैसे बोलते हैं, pi I equals to pi f into minus on the plus power L 1. plus 1। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए अगर आपका जब न्यूक्लियस एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट आ रहा है और उसका पैरिटी का कोई चेंज नहीं हो रहा है, सपोज मान लो ये आपका ऑड पैरिटी, इसका भी ऑड पैरिटी है ना, दोनों का ऑड पैरिटी है, तो इलेक्ट्रिक कौन कौन सा कॉज और इलेक्ट्रिक रेडिएशन कौन कौन सा आएंगे यहाँ पे, The odd value 1 3. नहीं पैरिटी चेंज नहीं हो रहा है ना, Oh, change no. अगर पैरिटी, इफ पैरिटी डेल्टा पाई नो, तो फिर आपका इलेक्ट्रिक कॉज में क्या क्या आएंगे आपको, आपका E2 E Sorry, E2, E2 E4. E4. Yes. Right. E6 है ना, और यहाँ पे डेल्टा पाई नो Magnetic मींस E1 E3. parity change, no, delta pi no means what, if it is odd then it will be odd, if it is even then it will be even, so इसको बोलते हैं parity change। अगर no है then इलेक्ट्रिक कॉज में क्या कहेंगे, E2 E4 E6, मैग्नेटिक में M1 M3 M5 एंड सो ऑन। तो M1 को क्या बोलते हैं हम बेसिकली, बोलो, मैग्नेटिक मोनोपोल या डाइपोल, Dipole. एग्जैक्टली मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक Dipole. इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल, Quadruple. Sorry, है ना, 2. Yes. dipole, on means dipole, 2 means quadrupole, then 3 means octapole Octave. and so on, है ना। अगर पैरिटी चेंज आया है, if delta pi is change, yes, then इलेक्ट्रिक कॉज में क्या कहेंगे, that will be 1 3 5. E on E3 E5, and मैग्नेटिक में M2 M4 M6 and so on, okay? Now we are going to discuss about that nuclear reactor। इतना हो गया, we are going to discuss about that nuclear reactor। So nuclear reactor is basically used to, let's say, okay, so nuclear reactor is basically source of energy, so there's a tremendous amount of heat is generated inside nuclear reactor, and that heat basically used to convert this heat energy to electricity, okay? So if you see that construction, you have a
This is your reflector. This is your reflector. है ना? This is your fuel. This is your, यहाँ पे आपका लिक्विड रहता है, इसको बोलते हैं हम मॉडरेटर. और this rod, this is called, this two rod, this is called control rod. Okay, and this is called coolant, and this is called heat exchanger. ओके अब मैं बताता हूँ, है ना? यहाँ पे सर, क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी, बोलो. सर ऊपर में वो क्या लिखा है? हाँ देखो, H2O. मैं बताता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा. बेसिकली क्या होता है, फ्यूल होता है. मैं हर एक को बताता हूँ. ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रॉड, ये जो आपका रॉड दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्यूल. ये फ्यूल बेसिकली क्या होता है, यूरेनियम 92 235 का बना हुआ होता है. अब इस यूरेनियम क्या करता है, जैसे न्यूक्लियर, इसमें क्या, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, आपका न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होता है. और न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, आपको पता है कि दिस यूरेनियम फ्यूल, ये जो रॉड है, दैट इज योर यूरेनियम फ्यूल. दिस फ्यूल मेड ऑफ द रॉड, दिस इज योर यूरेनियम फ्यूल. इट मींस इट इज मेड अप ऑफ uranium 92 235. It is absorbed on neutron, and what will happen, it will produce barium and then krypton. Atomic number, mass number लिख लेना आप लोग, ठीक है? और फिर you will have 3 neutron and there's a tremendous amount of heat, that is 200 mega electron volt. इतना heat produce होता है, right? So basically न्यूक्लियर रिएक्टर में आपका न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होती है, जहां पे आपका जो रॉड होती है, फ्यूल रॉड, दैट इज मेड अप ऑफ यूरेनियम 92 235, that is captured on neutron, and there's a nuclear fission process is happening. In that fission process, there's a production of barium nucleus, krypton nucleus, and 3 more neutron is produced. In addition to that, there's a tremendous amount of heat is producing. Okay, then यहाँ पे देखो, एक मॉडरेटर यूज करते हैं. मॉडरेटर बेसिकली यूज इसीलिए करते हैं, मॉडरेटर क्या करते हैं, जैसे आपका जो यहाँ पे जो आपका 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस जो हुआ है, ठीक है ना, ये इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. तो फिर एक क्या होता है यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर में, कि एक आपका न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस नहीं हुआ है, कि एक पहले इनिशियली क्या हुआ है, एक न्यूट्रॉन से लेकर शुरू हुआ है. अब 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो गया, ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेगा, फर्दर न्यूक्लियर फिजन करेगा. अब ये जो न्यूट्रॉन आपका निकला है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत ज्यादा होती है. अब जैसे आप सपोज मान लो कैरम खेल रहे हो, है ना, और आपको उस हॉल में आपको ये आपका ये होती है, उसको आपको होल में डालना होगा. तो फिर क्या करोगे, बहुत तेजी से करोगे, डालोगे, फिर वहां पे जाएगा, वो होल में नहीं जा पाएगा, वो फिर बाहर चला जाएगा, राइट? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे आप कैरम खेल रहे हो, मान लो, अगर उसको उसको आप बहुत तेजी से मारोगे, क्या वो होल में जाके गिरेगा? नहीं गिरेगा, बाहर चला जाएगा. तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है. जैसे आपका 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, ये 3 न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है. तो ये बहुत ज्यादा है, यानी मतलब क्या है कि ये 3 न्यूट्रॉन क्या, एक न्यूट्रॉन से आपका फिजन शुरू हुआ है, 3 न्यूट्रॉन फर्दर प्रोड्यूस हुआ है, ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेगा, फर्दर न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस करेगा. बट प्रॉब्लम क्या है, ये 3 न्यूट्रॉन जो होती है, इसका काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होती है. तो ये इसीलिए क्या होती है, ये जो फ्यूल रॉड है, इस 3 न्यूट्रॉन को कैप्चर नहीं कर पाता है, ठीक है ना. तो कैप्चर उसको क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है, फर्दर न्यूक्लियर फ्यूजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये काफी तेज में है ना, इसका काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होती है. तो ये आपका ये जो फ्यूल रॉड है, ये इसको कैप्चर नहीं कर पाता है. तो क्या करना पड़ेगा, इसको स्लो करना पड़ेगा टू मेक फर्दर न्यूक्लियर फिजन. तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडरेटर का यूज करना पड़ेगा. मॉडरेटर क्या करते हैं, बेसिकली जो आपका न्यूट्रॉन इमिट हुआ है, इसका काइनेटिक एनर्जी को या इसको स्लो डाउन करता है. तो मॉडरेटर में क्या क्या यूज करते हैं, वो आप लिख लो.
मॉडरेटर में बेसिकली हम यूज करते हैं बेरियम, जो मॉडरेटर हम यूज करते हैं बेरियम, देन हेवी वाटर एंड ग्राफाइट। ये आपको डायरेक्टली पूछ रहा है आजकल कि मॉडरेटर कौन सा यूज करोगे, तो कई सारे ऑप्शन दे देगा कि आप क्या कैडमियम को यूज कर सकते हो, है ना, ऐसा पूछा जाएगा। तो मॉडरेटर में बेसिकली हम यूज करते हैं, ये लिख लो, बेरियम यूज करते हैं। सर इसमें ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्टली इसमें पिछले बार भी आया था, इवन यूपीएससी में भी आता है ये, ठीक है। मतलब कोई भी एग्जाम देखो ये डायरेक्टली पूछ रहा है। तो मॉडरेटर में बेसिकली हम यूज करते हैं, लिख लो, बेरियम यूज करते हैं या हेवी वाटर यूज करते हैं या ग्राफाइट यूज करते हैं। ठीक है, तो मॉडरेटर का काम पता चल गया आपको, क्या काम है कि जो आपका 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है, उस 3 न्यूट्रॉन को क्या करेगा, फर्दर फिजन प्रोसेस में काम में लगाएगा, राइट। तो उसके लिए उस 3 न्यूट्रॉन को कैप्चर करना पड़ेगा। दिस 3 न्यूट्रॉन शुड बी कैप्चर बाय दिस फ्यूल रॉड, बट इसका काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा होता है कि वो न्यूट्रॉन जो आपका फ्यूल रॉड है ये कैप्चर ही नहीं कर पाता है। तो उसको कैप्चर करवाने के लिए प्रोसेस क्या है, इसको स्लो डाउन करना पड़ेगा। so that slow down can be happen by using moderator क्या करते हैं, इसका काइनेटिक एनर्जी को कम करते हैं और इसको स्लो करते हैं ना, इसका स्पीड को कम करते हैं। तो मॉडरेटर में उसी मटेरियल को यूज करोगे जिसका न्यूट्रॉन जो आपका स्लो डाउन पावर है, न्यूट्रॉन का जो स्लो डाउन पावर है वो दैट शुड बी लार्ज, क्योंकि इसको स्लो डाउन करना पड़ेगा। और बेसिकली आपका यूज होते हैं बेरियम या हेवी वाटर या ग्राफाइट यूज होते हैं। देन यू हैव कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड का काम क्या है, जैसे आपको पता चल रहा है कि हर एक फिजन में क्या हो रहा है, कितना एनर्जी इमिट हो रहा है, बताओ, हर एक फिजन में कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है जी, 200 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर आपका क्या हो रहा है, ये प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है कि ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर क्या करेगा, 3 और फिजन प्रोसेस करेगा, 3 और फिजन प्रोसेस करेगा, फिर यहाँ से 3 और फिजन प्रोसेस होगा, हर एक फिजन प्रोसेस से 3-3 करके बढ़ता जाएगा, राइट। क्योंकि 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, 3 न्यूट्रॉन फर्दर क्या करेगा, 3 मोर फ्यूजन प्रोसेस करेगा, फिर ऐसे चेन बढ़ता जाएगा, राइट। समझ रहे हो ना, क्योंकि एक फिजन के लिए आपको 1 न्यूट्रॉन चाहिए। जब एक फिजन हो रहा है 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, 3 न्यूट्रॉन फर्दर 3 फिजन करेगा, फिर हर एक 3 करते करते एक चेन प्रोसेस होता जाएगा। और एट द एंड क्या होगा, आपका बहुत सारे फिजन प्रोसेस होगा। इसका मतलब क्या है कि आपका चेंबर के अंदर अंदर बहुत सारे एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इतना एनर्जी ना क्रिएट हो ताकि एक्सप्लोजन हो जाए, तो इसलिए क्या करते हैं हम, कंट्रोल रॉड को यूज करते हैं। कंट्रोल रॉड क्या करते हैं, बेसिकली ये फ्यूजन प्रोसेस को कंट्रोल करता है। क्योंकि ज्यादा फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, मतलब क्या है, आपका चेंबर के अंदर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, तो यह क्या हो सकता है कि एक्सप्लोजन हो सकता है, राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड को यूज करते हैं। कंट्रोल रॉड क्या करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, तो कंट्रोल रॉड बेसिकली 2 न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेता है ना, और 1 न्यूट्रॉन को अलाउ करता है फर्दर फिजन करने के लिए। तो एक एक फिजन में फर्दर बढ़ता जाएगा, एक एक और फिजन बढ़ता जाएगा। अब जो एनहांसमेंट है, फिजन एनहांसमेंट, वो तो कम हो गया ना, कि जो 2 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से 2 को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल रॉड कैप्चर कर रहा है। तो कंट्रोल रॉड का काम क्या है, बेसिकली फिजन प्रोसेस को कंट्रोल करना, क्योंकि ज्यादा हो जाए फिर आपका बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा, देन देयर शुड बी चांस ऑफ एक्सप्लोजन। सो टू कंट्रोल दैट दिस इज कंट्रोल रॉड इज यूज्ड। और बेसिकली कंट्रोल रॉड में यूज करते हैं हम, लिख लो, कंट्रोल रॉड में यूज करते हैं हम बोरॉन, कैडमियम, सिलिकॉन, इंडियम। बोरॉन, कैडमियम, सिलिकॉन, इंडियम, ठीक है। अब ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इस हीट को लेके आते हैं कौन, कूलेंट लेके आते हैं बाहर, इस हीट को लेके आते हैं कूलेंट बाहर। अब यहाँ पे देखो एक रिफ्लेक्टर यूज करते हैं हम, कंक्रीट रिफ्लेक्टर। कंक्रीट रिफ्लेक्टर इसीलिए यूज करते हैं जब भी कोई प्रोसेस होती है, फ्यूजन प्रोसेस है ना चेंबर के अंदर, तो क्या क्या होती है, अल्फा बीटा डीके या गामा डीके होने का, कोई हार्मफुल रेडिएशन होने का प्रोबेबिलिटी होता है। अब रिफ्लेक्टर क्या करते हैं, ये जो हार्मफुल रेडिएशन इमिट हो रहा है उसको बाहर आने नहीं देते, दैट इज हार्मफुल फॉर अस। तो ये रिफ्लेक्टर
इसको कंक्रीट रिफ्लेक्टर भी बोलते हैं। तो जो भी फिजन प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे कुछ अल्फा बीटा या गामा डीके या कोई हार्मफुल रेडिएशन हो उसको बाहर आने नहीं देता है। सो दैट इज द वर्क ऑफ कंक्रीट रिफ्लेक्टर। अब ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है इसको बाहर लेके आते हैं कूलेंट। तो आपका हीट आ गया और यहाँ से आप क्या कर रहे हो, वाटर को इनलेट कर रहे हो, तो वाटर आके क्या कर रहे हैं, इस हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और जो आपका वाटर बाहर जा रहे हैं दैट इज योर वेपर एक्चुअली। वेपर आपका वेपर वाटर जा रहा है एक्चुअली बाहर, है ना। और ये आपका वेपर जाके क्या कर रहा है, टर्बाइन में गिर रहा है एंड देयर इज ए रोटेशन ऑफ टर्बाइन, है ना। वहां से आपका बेसिकली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो हीट एक्सचेंजर सॉरी दिस इज योर कूलेंट। ये आपका कूलेंट क्या हो रहा है, हीट को यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में लेके आ रहा है, वाटर इनलेट हो रहा है, इस हीट को एब्जॉर्ब करके क्या हो रहा है, ये वेपर हो रहा है, वो वेपर आपका बाहर जा रहा है एंड दैट इज इंसिडेंट ऑन टर्बाइन एंड देयर इज अ रोटेशन ऑफ टर्बाइन दैट इज प्रोड्यूसिंग योर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हर एक एक्चुअली यहाँ पे मेन जो चीजें है कि कंट्रोल लॉट का वर्क क्या है, क्या क्या यूज करते हैं, फिर आपका मॉडरेटर का काम क्या है, ये सब चीज पूछ सकता है ना, और क्या क्या यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल, नथिंग इज दैट, जस्ट यू आर यूजिंग दिस एनर्जी टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। सर रिफ्लेक्टर में कौन सी मटेरियल यूज करते हैं? रिफ्लेक्टर में कौन सी मटेरियल, आई डिडंट हाईली रिफ्लेक्टिंग यूज करते हैं, आई चेक एंड आई लेट यू नो, राइट नाउ आई डिडंट राइट इट। ओके, हाँ जी, graphite should be used then. ग्राफाइट, ग्राफाइट क्या हाईली रिफ्लेक्टिंग है? देखो ऐसा मटेरियल यूज करोगे जो आपका हाईली रिफ्लेक्टिंग तो फर्स्ट ऑफ ऑल होना ही चाहिए, और जो आपका क्या हो, इजीली अवेलेबल हो, स्टेबल हो, नॉन टॉक्सिक हो, है ना, ये सारे क्राइटेरिया होती है। आप ग्राफाइट सर ये रिएक्टर ये मतलब लास्ट में जो डिस्कस हुआ ये रिएक्टर से ये कैसे क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मॉडरेटर क्या होता है काउंटर क्या होता है कैसे? हाँ एग्जैक्टली आपको इस तरह की क्वेश्चन आती है कि मॉडरेटर में कौन सा एलिमेंट यूज करोगे इनमें से, है ना, ऑप्शन गिवन रहेगा, है ना, या आपको आपका ये जो आपका कंट्रोल रॉड के लिए कौन सा मटेरियल यूज करोगे, लाइक दैट, है ना, इस तरह की क्वेश्चन आती है आपका, या फ्यूल के क्या यूज करोगे, है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल गया ना कि कैसे न्यूक्लियर रिएक्टर काम करती है ना। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है यू कैन इजीली डू व्हाटएवर प्रॉब्लम यूज टू आस्क, है ना, आराम से कर लोगे। अगर ये डिस्कशन आपको पता समझ में आया तो यू कैन इजीली डू एंड सर्टेन आई विल चेक एंड आई विल लेट यू नो व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल यूज फॉर रिफ्लेक्टर, चेक। एंड देन यू हैव a GM counter. So in GM counter is actually powerful to detect that radiation. So in GM counter you have a cylindrical shape. This is basically cylindrical shape, and around the center of this cylindrical shape, a metallic container, there's a anode. Okay. Oh. So this is your anode basically. It's basically made up of tungsten. Okay. And here high potential is applied between anode and this side will have cathode. So this is your negatively charged and this is your positively charged. Okay. और इस जो सिलिंड्रिकल चेम्बर है यहाँ पे क्या होती है, बेसिकली यू हैव ए आर्गन मिक्सचर ऑफ आर्गन गैस एंड यू हैव ए इथानॉल,
है ना. The contribution is 90% of your argon and 10% is of ethanol. Okay, so first of all, the extremely high potential is applied between cathode and anode. Anode is made up of tungsten. अब So जब what is the percentage of argon plus ethanol? It's 90 and 10. 90% argon and 10% is ethanol. Okay, so basically what is happening, that when that external radiation like alpha, beta and gamma, when they're coming, what will happen? Tell me. Alpha, beta और gamma. Suppose एक alpha particle या एक beta particle या एक gamma particle enter किया chamber में, फिर क्या होगा? That argon will be ionized. Argon will be ionized to argon plus and electron minus, right? अब देखो एक साइड आपका एक्सट्रीमली पॉजिटिव, सेंटर में जो है आपका एक्सट्रीमली पॉजिटिव पोटेंशियल है और सरफेस में क्या है आपका नेगेटिव पोटेंशियल है. तो जो आपका आर्गन प्लस क्रिएट हुआ है और इलेक्ट्रॉन माइनस क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड एट एक्सट्रीमली हाई काइनेटिक एनर्जी टुवर्ड्स एनोड एंड आर्गन प्लस किधर मूव करेगा? आर्गन प्लस किधर मूव करेगा? विल मूव ऑन कैथोड की तरफ मूव करेगा. अब जो जब आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस काफी ज्यादा आपने अप्लाई की हो, फिर क्या करेगा? इसके पास काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, तो इसके रास्ते में जो भी आर्गन मिलेगा उसको क्या करेगा वो? That electron is accelerating at extremely high kinetic energy. Why? Because the potential applied is extremely high. तो जब इसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो इसके रास्ते में तो और सारे आर्गन एटम आएंगे ना, तो उस आर्गन एटम को क्या करेंगे वो? आयनाइज कर दे. फर्दर आयनाइज करेगा वो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ क्रिएशन ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन बिकॉज योर एक्सटर्नल रेडिएशन इज एंटर इन योर चेंबर. अब एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ है, यहां से क्या होगा? जब एनोड की तरफ आएगा तो फर्दर वो क्या करेगा? बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली हाई काइनेटिक एनर्जी, फर्दर क्या करेगा वो? आर्गन एटम को आयनाइज करेगा. अब आयनाइज करके क्या मिलेगा? आपको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा. तो पहले आपका 1 इलेक्ट्रॉन था, अब कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट? समझे कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन पहले था, दैट क्रिएटेड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशन. जब एक ये इलेक्ट्रॉन जब एक आर्गन एटम को आयनाइज करेगा तो फिर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया. एक आपका ऑलरेडी था और एक आपको मिला है आर्गन एटम को आयनाइज करने के बाद, है ना? एंड दैट आयनाइजेशन इज हैपनिंग बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन इज हैविंग एक्सट्रीमली हाई काइनेटिक एनर्जी. अब ये फिर क्या करेगा? हर एक इलेक्ट्रॉन फिर फर्दर क्या करेगा? सेकेंडरी आयनाइजेशन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके पास इतना काइनेटिक एनर्जी होती है कि ये आर्गन एटम को आयनाइज कर सके. तो हर एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या करेगा? एक एक आर्गन एटम को आयनाइज करता जाएगा. सो देयर इज बेसिकली क्रिएशन ऑफ मोर एंड मोर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन. अब ये करते करते जब आपका एनोड में पहुंचेगा तो देयर बी, यहाँ पे क्या होगा? देयर बी क्रिएशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आके एनोड में एब्जॉर्ब होगा, है ना? तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इसीलिए प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आपका आ रहा है एनोड की तरफ, इसके पास काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा है कि इसका रास्ते में जो भी आर्गन एटम है, न्यूट्रलाइज आर्गन एटम, उसको आयनाइज कर सके. तो इसीलिए इतना सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ आपका एनोड में आके एनोड एनोड पहुंच रहा है, तो इतना सारे इलेक्ट्रॉन आपका प्रोड्यूस हो रहा है एक साथ. अब ये इतना सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ क्या हो रहा है? यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है. जब इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, क्या होगा? they will pass through this external circuit, right? है ना? जब एक्सटर्नल सर्किट पास हो, सर्किट में पास होगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा? आपको एक पोटेंशियल ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा, नहीं? एक पोटेंशियल ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा, राइट? अब फिर क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे पहुंचेगा, और जो आपका आर्गन प्लस है और कैथोड में क्या है? बेसिकली आपका नेगेटिव चार्ज है, राइट? तो ये
जब आर्गन प्लस इस कैथोड में आके पहुंचेगा फिर क्या करेगा, इस कैथोड से क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, राइट। सो यू हैव टू कीप इन माइंड, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक साइड, एनोड में आके एब्जॉर्ब हो रहा है, दिस इलेक्ट्रॉन इज passing through this external circuit. When it is crossing that load, there is a sudden potential drop is observed across this load, and that basically signifies, ये जो potential drop हुआ है ये क्या denote कर रहा है कि there is a external radiation enter into the chamber. So basically you are using GM counter to detect alpha, beta or gamma radiation coming from outside. तो जैसे आपका ये चार्ज पार्टिकल आया है और आरएल थ्रू पास हो रहा है, तो फिर जैसे आपको एक पोटेंशियल ड्रॉप देखने के लिए मिला है, इसका मतलब क्या हुआ है कि आपका कोई एक्सटर्नल रेडिएशन चेंबर में आया है, ठीक है ना। अब ये आर्गन प्लस जब आपका कैथोड में आके गिरेगा या इंसिडेंट होगा, फिर क्या करेगा, कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, राइट, एंड इट विल बी कन्वर्टिंग टू आर्गन, न्यूट्रल आर्गन, एंड देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ फोटोन, है ना। When this argon plus reach on the surface, what will happen, it will take, it has more electrons, so it will take on electron from this cathode and it will be converted to argon and photon. And this photon, ये जो photon है, it can further do that ionization process. It can further do that ionization process. फिर आपका क्या शुरू हो जाएगा, ये आयनाइजेशन प्रोसेस शुरू होगा, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा, आर्गन प्लस क्रिएट होगा, फिर आपको दोबारा क्या मिलेगा, दोबारा पोटेंशियल ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। बट इसको आपको नहीं चाहिए, एक एक्सटर्नल रेडिएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक बारी पोटेंशियल ड्रॉप देखना है, क्योंकि आपको काउंट करना है कि कितना एक्सटर्नल रेडिएशन है। तो ये जो है मेजरमेंट को फॉल्सिफाई कर सकते हैं कि जब आपका एक फोटोन इमिट हो रहा है, कहां से इमिट हो रहा है, जब आपका आर्गन प्लस एक कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल आर्गन एंड न्यूट्रल आर्गन में कन्वर्ट हो रहा है, उस टाइम ये फोटोन इमिट हो रहा है, ये फोटोन फर्दर आयनाइज कर सकता है आर्गन को, एंड देयर विल बी अगेन क्रिएशन ऑफ दिस एवलांच इफेक्ट, एंड दैट लीड्स टू again drop in the potential across RL, and that may falsify that measurement. तो फिर उसको कैसे आप रेक्टिफाई करोगे, that's why we are using that ethanol. So ethanol basically absorb, इसका molecular structure इस way में होती है, it can absorb this photon and it will be dissociate, and this process is called quenching. So basically ethanol को यूज करते हैं हम quenching process के लिए, कि जो आपका फोटोन इमिट हुआ है ये फर्दर एवलांच इफेक्ट को ना करे, हालांकि ये क्या करेंगे, इट विल बी एब्जॉर्ब बाय दिस इथेनॉल एंड विल बी दैट इथेनॉल विल बी डिसोसिएटेड। तो इथेनॉल यूज करते हैं हम क्वेंचिंग इफेक्ट के लिए। अब यहाँ पे एक चीज और होती है, जैसे आपका एक सेंटर में आपका वायर है और एक आपका ये वायर है, सपोज ये जो आउटर वायर है इसका जो रेडियस है, लेट अस टेक दैट रेडियस इज डी, हाँ, और आपने जो पोटेंशियल अप्लाई किया हो वी अप्लाई किया हो, और जो सेंटर में वायर है इसका रेडियस सपोज मान लो स्मॉल है, तो एट एनी पॉइंट इनसाइड दिस cylindrical chamber, the distance from center of the wire to this point is r. So यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है that is how much, v by r into ln b by a. तो जैसे आप सेंटर से जैसे आप दूर होते जाओगे, your electric field will be decreasing because E is inversely proportional to R. यहाँ से भी आपका क्वेश्चन दे सकता है, you have applied potential V, so the electric field at a point that is at a distance R from the center of the wire, ठीक है। So if you know the radius of inner wire and radius of outer wire, that is B, and for inner wire the radius is A, so you can calculate electric field at any point, that is V applied potential divided by R into ln B by A. So this is all about your nuclear physics. सर इस क्वेश्चन को और एक बार सर बता देंगे, कौन सा, ये वाला? हाँ हाँ जी, रेडियस, हाँ, जैसे आपने पोटेंशियल कितना अप्लाई किया, आपने भी अप्लाई किया आपने, राइट, और आपका जो इनर एक आपका क्या है, एनोड दिख रहा है आपको, एक वायर दिख रहा है, यस सर, हाँ, इसका रेडियस आप कितना है, स्मॉल है,
और जो आउटर सरफेस है इसका रेडियस कितना है, b है। मतलब सेंटर से जो आउटर जो कैथोड है इसका रेडियस कितना है, b है। और आप कोई पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हो, एंड दैट पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एनोड इज r, and that electric field will be applied potential divided by r into ln b by a, where b is the radius of outer wire and a is the radius of inner wire or anode. A is the radius of anode, b is the radius of cathode. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r ऑन बाय r। ओके, इसके बेस पे भी आपका क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपको ये भी बोल सकते हैं कि इथेनॉल का क्या यूज है। इथेनॉल किस लिए यूज कर रहे हो आप, क्वेंचिंग प्रोसेस के लिए। क्वेंचिंग प्रोसेस मतलब जो आपका फोटोन इमिट हो रहा है, इस फोटोन को फर्दर ये आपका आयनाइज ना कर पाए, है ना, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आप फोटोन यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड क्वेंचिंग प्रोसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट जेम काउंटर। सो इतना ही आपका न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए सफिशिएंट है। ओके, सो विल स्टार्ट आफ्टर 5 मिनट्स, विल स्टार्ट पार्टिकल फिजिक्स, है ना। बट प्लीज ये न्यूक्लियर रिएक्टर और जेएम काउंटर आप पढ़ के जाओ, है ना, क्योंकि आजकल क्या होता है थोड़ा एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी दे रहा है। अगर एक्सेप्शनल क्वेश्चन दे दिया तो थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है, यहाँ से आपको मिल जाएगा जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके लिए, मैं उसको समराइज करके लेके आया था। तो इतना अगर पढ़ के जाओगे आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक। So after 5 minutes we'll start again. Okay. Okay, sir.